Hello friends, welcome to Programming by shuklaclasses. Today's topic is polymorphism in C++. Complete topic हिंदी और इंग्लिश में होगा, तो चलिए शुरू करते हैं. Let's begin. First question arise हुआ है, what are polymorphism? है क्या polymorphism? So the term polymorphism gets derived from the Greek word. First is the poly plus morphos. So where poly means many and morphos means forms. So in a programming background, polymorphism can be broadly divided into two parts. First is the static polymorphism, second is the dynamic polymorphism. ओके तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक के वर्ड हैं पॉलीमॉर्फस. पॉली का मतलब है कई यानी कि मैनी, और मोर्फस का मतलब है फॉर्म्स. तो इसके दो भागों में बांटा गया है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म. इसका शेप और ड्रॉ देखते हैं. फर्स्ट है ट्रेंगल ड्रॉ, रेक्टेंगल ड्रॉ एंड सर्कल ड्रॉ. तो इसका एक शेप देखते हैं. अभी एक थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे. अभी नेक्स्ट पे देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है. Polymorphism is another concept of object-oriented programming, the attitude which lies beneath the concept is single interface having multiple implementation. ये जो concept है किस पे डिपेंड है? सिंगल इंटरफेस होना चाहिए, उसके पास मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए बैकग्राउंड में. तो दिस प्रोवाइड्स ए सिंगल इंटरफेस फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू ए जर्नल क्लास ऑफ एक्शन. So polymorphism can be gained is the both way. First is the compile time and second is the run time. तो ये both के थ्रू ये गेन करता है. ओके फर्स्ट देखते हैं. A common and simple example of polymorphism is when you use AND as operator overloading in C++. For C in यानी कि input and output C out statement respectively, this bitwise shift operator at that time acts as an inclusion operator and its overloaded meaning is defined in iostream header file. Okay, so next now we have seen here in the static polymorphism. So in static polymorphism or early binding, there you will get two subcategories. Like first is the function overloading, which is the process of using the same name for two or more functions. The second is the operator overloading, which is the process of using the same operator for two or more operands. So some code is snipped for function overloading. So class function all the publicly and curly braces between function all the function all integer and the float b float a. Code is snipped for operator overloading. So class call c the publicly in the curly braces the plus operator overloading technique, integer function operator plus the calyx c g private integer k. It is the noted the function overloading can be done and this is possible only based on the return type of the overloading function and the parameter its arrangement. So this refers to the entity which changes its form depending on increment at runtime. This concept can be adopted as analogs to Semlin, changing its color at the sight of the approaching object. So we are seen now the dynamic polymorphism के बारे में थोड़ा हमने समझा. Virtual function क्या होता है वो समझते हैं. तो a virtual function can be defined as the member function within a base class, which is you expect the redefine in derived class. For creating a virtual function, you have to precede u functions declaration within the base class with a virtual keyword. Example, how do you use virtual function object members and even you define the constructor implicitly and automatically construct explicitly. तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों का, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं समझने में इनकैप्सुलेशन को. और कमेंट करें अगर आपको कुछ समझ में नहीं है या फिर किसी और टॉपिक के बारे में वीडियोस आते हैं तो. और आशा करता हूँ आपको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हमेशा अपडेटेड रहने के लिए C++ एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. थैंक यू.